hours. We started the day with this one hour ceremony, which was then followed by a rally. After that, we had a three-plantation drive at our campus, and then finally the foundation day celebrations here at Jubilee Hall, which was duly witnessed by all of you. The guest of honors for the inauguration were Professor Dr. J.B. Yadav, Honorable Vice Chancellor, RR University, Alvar, Sri Yogesh Kumar Mishra, President of the State Congress Committee, Alvar, Rajasthan, India, Sri Ajit Singh Yadav, Secretary, PCC, Rajasthan, Member Khadi Gram Udyog Board, Government of Rajasthan, India, Sri Ram Bharat, Advocate, Alvar, Rajasthan, India. We have the unveiling of books, which was the extension of International Conference on Multidisciplinary Aspects of Environment and Sustainable Development after COVID-19 pandemic 2021, held from 15 to 18 December 2021, edited by Dr. Pankaj Sharma and Dr. Ramsey. The titles of the books were One Day and Most Towards Pharmacology, then Book 6 was Recent Advances in Science and Technology. These books were published by Mr. Bharti to India, and I do many of the papers published in those edited books. So my congratulations to all the authors who have contributed in these books. After that, we have unveiling of two more conferences, which one was first was which is happening in collaboration between RRC Alvar and Maharani Sudarshan College Government, BKT, shortly known as ICMHRA 2023. Multidisciplinary aspects of human rights and the environment. This is another offline conference which we are holding. And the topic is very subtle and we need an urgent attention as it is quoted by the United Nations on their page. We will be shortly sharing you the brochures and registration link, and I hope that everyone is going to join us there as well. After that, we had the release of brochure of ISTTP-6. As I've told you, these are the series of 10 training programs which are going to happen, and this is the 5th one. So we have covered the halfway as of now. And ISTTP-6 is going to happen from 1st to 7th February. And the topic will be clean living, reduce, reuse, and recycle. We will be shortly sharing the brochures with you, and I request all of you to try to join us there as well. The day was completed by thank you and a small celebration ceremony. And after that, the 5th day was the home assignment day. I will be circulating the topic of home assignment today. And as it has been requested by delegates many times, that we should give you more time. So sure, everyone, we are going to give you 10 days this time. Every time we give only 4 to 5 days, but this time we will give you 10 days from today onwards so that you can submit your home assignment to us. Again, I would like to tell everyone who are joining as a delegate in this ISTTP-5, there are 3 important things which are mentioned by UGC to get the certificate. One is the registration. Second is the feedback form. And third is the home assignment. So I would request everyone kindly do your home assignment and send us on emdtoxicol@gmail.com. So I will be sharing the topic and the question today with you, and we will give you good 10 days to write to us. And then the free forum and feedback, as always we do. What is the use of a White House if we don't have a beautiful and adorable planet to enjoy? You just got to go live in one corner of the house. A nation that destroys the soil destroys itself, forests and the lands of our land, purifying the air and giving fresh air, fresh strength to our people. Save planet, save earth, and save trees. Can we check if the speaker Dr. Nitin Jambu is with us?
Yeah, he's very much here. So without taking much time, I would like to introduce to you our first speaker of the day, Dr. Mitchell Jacobi. Dr. Jacobi completed his schooling at St. Joseph High School and Thrissur and higher secondary from Open School Government of Kerala. He has completed his bachelor's in economics from Rice College, Calicut University in second rank. He has obtained master's in economics from Rice College with first rank in the group. And heartiest congratulations to Dr. Jacobi. He qualified UGC NET exam in the year 2017. He worked as a communicative English faculty of one Institute of Communicative English at Sirajul Mughal School, Kannauр, and Holy Mary Central School, Kayamuna. He joined as assistant professor at Sacred Heart College, Chadakuni on 1st January 2018. He has more than 5 years of teaching experience. He is one of the content writers of economics of Sri Narayana Group Open University, UGC, and first Open University in Kollam, Kerala. He joined as assistant professor at Sacred Heart College on 6 June 2022. Dr. Jacobi, आपका बहुत स्वागत आपका अभिनंदन. We are very happy that you are with us and spending your time. So I request you to kindly start with your name and address. Yeah, yeah. Thank you. Thank you for the nice introduction, Mamdaji. So I will share my screen. Yes, sir. Okay, can you see my screen now? Dr. Jacobi. Okay. So myself, Nijil Jacobi, and today I will be discussing green chemistry for a green economy. So our forest, our rivers, oceans, and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. And we also rely on for them numerous other goods and services. And we depend on for our health, happiness, and prosperity. The natural assets are often called the world's natural capital. And all these natural capital assets are the base of ecosystem services that make human life possible by, for example, providing nutritious food and clean water, regulating disease and climate, supporting the pollination of crops and soil formation, and providing recreational, cultural, and spiritual benefits. And we must avail these ecosystem services in the future too. And in this concept, let us see the concept of green economy. Green economy is defined as low carbon, resource efficient, and socially inclusive. And in a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment and into such economic activities, infrastructure, and assets that allow reduced carbon emissions and pollution, enhanced energy and efficiency, and prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. The notion of green economy does not replace sustainable development, but creates a new focus on economy, investment, capital, infrastructure, employment, and skills, and positive social environmental outcomes across the globe. Sustainable consumption and production aims to improve production process and consumption practice to reduce consumption, waste generation, and emission across the full life cycle process and products. While resource efficiency refers to the ways in which resources are used to deliver value to society and aims to reduce the amount of resources needed and emission and waste generated per unit of product or service. Green economy provides a macroeconomic approach to sustainable economic growth and resource efficiency, and with a central focus on investment, employment, and skills. Multi-stakeholder partnership for the promotion of green economy are supported to accelerate and consolidate sustainable changes in both consumption and production patterns.
And in addition to government and non-profit organization, UN Environment has increased its engagement with private sector and which is very important actor in promoting resource efficiency and green economy. And now let's see the concept of green chemistry in this context. Green chemistry is an area of chemistry and chemical engineering focused on the designing of products and processes that minimize the use and generation of hazardous substances. The concept of green chemistry developed in the business and regulatory community as a new natural evolution of pollution prevention initiatives. And in our efforts to improve crop protection, commercial products and medicines, we also cause unintended harm to our planet and humans. By the mid 20th century, some of the long-term negative effects of these advancements could not be ignored. Pollution choked many of waterways, and acid rain deteriorated forest health, and there were measurable holes in the nature Earth's ozone. And some chemicals in common use were suspected to causing or directly linked to human cancer and other adverse human and environmental health outcomes. Many governments began to regulate the generation and disposal of industrial waste and emissions. The United Nations formed the Environmental Protection Agency (EPA) in 1970, and which was charged the protecting with protecting human and environmental health and through setting and enforcing environmental regulations. And green chemistry takes the EPA's mandate a step further and creates a new reality for chemistry and engineering by asking chemists and engineers to design chemicals, chemical process, and commercial products in a way that, at the very least, and avoids creation of toxic and waste. It is green chemistry is also called sustainable chemistry, and green chemistry focuses on technological approaches to prevent pollution and reducing consumption of non-renewable resources. The goal of green chemistry in the design is the design or redesign of products and manufacturing processes to reduce their impact on human health and the environment. And fundamental to green chemistry concept is the idea of sustainability, reducing environmental impacts and conserving natural resources for future generation. And although many of the principles of green chemistry are not new, the extent to which they have been organized into a coherent approach and the degree to which they are being applied have resulted in an intense attention on the topic among the academic, industrial, and regulatory communities. In 1998, Paul Anastas and John C. Warner, American chemists, published a set of principles to guide the practice of green chemistry. And the 12 principles addresses the range of ways to reduce environmental and health impacts of chemical production and also indicate research priorities for the development of green chemistry technologies. So let us discuss the principles of green chemistry. So these principles covers the design of chemical products and processes that reduces or eliminate the use of generation of hazardous substances, the use of renewable material feedstock and energy resources, and the use of safe environmentally begin the substances including solvents whenever possible, the design of efficiency or energy efficient processes, so avoiding the production of waste and which is viewed as an ideal form of waste management. So now let's discuss all these principles in detail. So the first principle is prevent waste. So design chemical synthesis to prevent waste and leave no waste to treat or clean up. By reducing the amount of waste you create, you help prevent pollution and protect environment. You also limit the amount of waste going to landfill and preserve natural resource and save money.
And the second one, maximize atom economy. So design synthesis so that the final product contains the maximum proportion of the starting chemical and waste few or no atom. And Professor Barry Trost of Standard University developed the concept of atom economy and chemical reactions that do not waste atom. And Professor's concept of atom economy includes reducing the use of non-renewable resources and minimizing the amount of waste and reducing the number of steps used to synthesize chemicals. So, principle three, design less hazardous chemical synthesis. Alongside human health, the long term and widespread environmental impact of hazardous chemicals is also an important consideration. That's because hazardous chemicals can affect ecological niches and cause many organisms from soil microbes to marine organisms to become extinct. And thus, green chemistry proposes to design or redesign synthesis to use and generate substances with little or not toxicity to either humans or to the environment. And the fourth principle is design safer chemicals and products. Design chemical products that are fully effective yet have little or no toxicity. Reducing toxicity is a constant priority in chemistry. The challenges comes in knowing what makes a molecule toxic. When it comes to molecules and that have never been made before, toxicity becomes an ever bigger concern. The field of toxicology allows us to either predict or test the molecule's toxicity, and making partnership between chemists and toxicologists an incredibly important. Many green chemistry educators are also pushing towards including a working knowledge of basic toxicology into undergraduate chemistry degrees to train all future chemists to consider toxicity from very beginning of molecular design. And the next one is use safer solvents and reaction conditions. Now, avoid using solvents and preparation agents or other auxiliary chemicals. And if these chemicals are an absolutely must, and use safer ones like green solvents. Green solvents are environmentally friendly solvents or biosolvents, which are derived from the processing of agricultural crops. The use of petrochemical solvents is like a key to majority of chemical processes, but with not without severe implications of environment. So thus, green solvents are safe, stable, and renewable, and also atom economical. So the next principle is increase energy efficiency. Run chemical reactions at room temperature and ordinary atmosphere pressure whenever it possible. The another one is use renewable feedstocks. Use starting materials, also known as feedstocks, that are renewable rather than depletable. The resources of renewable feedstock is often agricultural products or waste of other processes. The resource deplete feedstocks is often fossil fuels, so petroleum, natural gas, or coal, or mining operations. And the next principle is avoid chemical derivatives. Avoid using or blocking or protecting the groups or any temporary modifications if possible. And derivatives are use additional regrade and generate waste. And next one is principle nine, use catalyst, not sorting chemistry or regrants. So minimize waste by using catalytic reactions. And catalytics are effective in small amounts and can carry out a single reaction many times. And they are preferable to stereochemical reaction reagents and which are used in excess and carry out a reaction only once. The next principle, design chemicals and products to degrade after use. The design chemicals products to break down the innocent substances after use so that they do not accumulate in the environment. And next principle is analyze the real time to prevent pollution, including process real time monitoring and controlling
or controlled during synthesis to minimize or eliminate the formation of byproducts. Last but not least is minimize the potential for accidents. Design chemicals and their physical forms, solid, liquid, or gas, to minimize the potential for chemical accidents, and including explosions, fires, and release to the environment. So, in short, the green chemistry is the utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use of generation of hazardous substances in the design, manufacture, and application of chemical products, so that any adverse impact on environment is prevented or at least reduced. And green chemistry provides pollution at its source by minimizing or eliminating the hazard of chemical feedstocks, reagents, and solvents and products. And the remediation by many may include the separating hazardous chemicals from other chemicals or other materials, and then treating them so they are no longer hazardous, or concentrating them for safe disposal. And if a technology reduce or eliminates the hazardous chemicals used to clean up environmental conditions, this technology would qualify as a green chemistry technology. The development of greener producers can therefore be seen as an investment for the future. A typical chemical process generates products and waste from raw materials such as substance and solvents and reagents. And if most of the reagents and the solvents can be recycled, and the formation of waste may be reduced significantly. So just before this lecture, I was discussing the concept of green chemistry with our one of my colleague, and who is the HOD of chemistry department of our institution. He told me that making paracetamol now contains 6 steps or 6 processes, and if you are applying the green technology for producing paracetamol, and we just require 3 steps. So this shows how easy it is, and also how environmental friendly is it. And we are able to develop chemical process and earth friendly products that will prevent pollution into the first place. And through the practice of green chemistry, we can create alternatives to hazardous substances, and we can design chemical processes that reduce waste and reduce demand on diminishing resources, and we can employ and processes that use smaller amounts of energy, and we can do all of these skill maintain economic growth and opportunities while providing affordable products and services to growing our world population. So green chemistry is not a politics. Green chemistry is not a public relation policy. Green chemistry is not a pipe dream. This is future of chemistry. This is green chemistry. And it's important to note that the scope of these green chemistry and engineering principles go beyond concerns over hazards from chemical toxicity, and include energy conservation, waste reduction, and life cycle considerations such as use of more sustainable or renewable feedstocks, and designing for end of life or final disposition of the product. So green chemistry can also be defined through the use of metrics. And while a unified set of matrices has not been established, many ways to quantify greener processes and products have been proposed. And these metrics include one, mass, energy, hazardous, substance reduction and elimination, and life cycle environmental impacts. And by using this green chemistry, we can move upon, or we can go with a green economy. So by its wind up, if you do love truly, you truly love nature, you will find beauty everywhere. Thank you. Hello, hello. Sorry, please accept my apologies. There was a phone call, urgent phone call from my family, so just bear with me. It was wonderful
Dr. Jacobi. If any questions, please open the chat box. If any questions, yeah. There's someone is asking, is the sessions are recorded? Yes, all the sessions are being recorded. And we will be putting them on EMB toxicology, environmental toxicology, which is our YouTube channel. I will definitely be sharing the link with you. Please subscribe and see all the recordings of every day there. So, any, please open the chat box, please. Is there any companies practicing green chemistry in India, Dr. Jacobi? Yeah. There are certain companies that are using green chemistry, like the Merck Group, the Abbott, and Johnson & and Roche, and American. There are certain companies that are using green chemistry technology. I say the government must take some steps or mandate every companies that produce chemicals must follow this green technology or green chemistry techniques, so that we can reduce the hazard caused by this the chemicals. So there is a lot of appreciation. Yeah. Okay. There's a lot of appreciation for you, Dr. Jacobi, if you see the chat box. Yeah. Again, please open the chat box again. I could see only the one question that I have already answered, and one solution is that, so please add it in our PPT. Then definitely I will do it in the coming sessions if it is required. There is a suggestion that please add this information in your PPT, so people want to know more about it. Yes, yeah. Sir, can you give some combination between the green economy and the circular economy? Actually, I'm not from chemistry background. I'm an economist anyway. But I say in economics, we discuss about the sustainable development or the use of efficiency in production. So I say if we use these kind of technologies, actually we are reducing the cost of production. We can produce the products with a cheaper rate. So there will be certain demands. But the problem is that, and adopting these kind of methods may take steps for longer period. So as an economist, I say a producer always wants to produce more and sell at a low cost, and he is not ready to wait for this long period or the step that hours his what we say the production and his revenue. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah, if there's no more questions, it's time to formally thank Dr. Jacobi. Dr. Jacobi, we thank you from our bottom of our hearts that you took out time, and every time whenever I see your PPT, the topic is so interesting. And I would like to invite you in ISTTP-6 as well, because that is exactly for you. It's like green living, reduce, reuse, and recycle. I think that would be very appropriate to talk about it. Okay, thank you, ma'am. Thank you for the Thank you so much from all the organizers, from our vigilant principal, and everyone from here at RRC community. We thank you. Thank you. So our next speaker for today is Dr. Prem Sonwal. He is assistant professor in geography in SCRS Government College at Savai Madhopur, Rajasthan, India. He did his MSc in MPhil from Department of Geography, University of Rajasthan, Jaipur. He has been awarded PhD degree on the water resource management from Kota University. So he's a guy on water conservation. So it'll be very useful to us. Trust me and please stay with us. He has 11 years of experience in research and teaching. He is an author of 2 books and also edited 6 reference books. He has published dozens of research papers in national and international journals. He has presented many research papers in national and international seminars. He participated in many webinars and seminars as a resource person, and also performed as a convener in national level webinars on environmental conservation, geoinformatics technologies, and intellectual property rights themes.
He is associated as a light member in various academic bodies, including Indian Institute of Banking and Finance, the National Geographical Association, National Association of Geographers, India, which is known as NAGI, Social Science and Humanities Association, and ISMIRA Research Association. He is actively participating in MDPs, MOOC courses, STTPs, workshops, symposium, and administrative educational training programs. He is making people aware of the issues related to water resource management and environment conservation along with teaching. So I think he's about to join us, so please bear with us. He'll be joining us soon. So let's wait for, just check on Dr. Sonwal is online. Yes, ma'am. Yeah, please here. Please meet him up. Dr. Sonwal, आपका कौन मान स्वागत है आपको अभिनंदन अलवर से. आवाज आ रही मैडम मेरी? बिल्कुल सर, बहुत साफ. थोड़ा ओके मैम. Can you please move me from your system? गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबसे पहले तो मैं आरआर कॉलेज के प्राचार्य साहब और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम का हूँ कि उन्होंने मुझे ISTTP प्रोग्राम में yourself, sir. Sir, we have made you the co-host. Please unmute yourself क्योंकि हमें disturbance आ रहा था पीछे से. Please unmute yourself, sir. Sir, please unmute yourself. यस मैडम. Yes, fine. Please go. ओके मैडम. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबसे पहले तो मैं आरआर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम ममता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस ISTTP प्रोग्राम में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया. जो मेरा टॉपिक रहेगा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया और जो रिसेंटली इसमें जो चेंजेस हुए उसके बारे में. तो सबसे पहले मैं वाटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा. जैसे कि सबको पता है कि जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन एवं जीवन का आधार है. ये वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. यह न केवल मानव बल्कि प्लांट, एनिमल और सभी के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है. जीवन, आजीविका, पारिस्थितिकी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है. जो एनवायरमेंट की जितना भी प्रोसेस होता है, संपूर्ण पर्यावरण की जितनी भी प्रक्रिया है वो जल के द्वारा ही संचालित होती है. जल मानव को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अमूल्य संसाधन है. हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल सोर्स है वो हमसे वर्षा से ही प्राप्त होता है. इसका कुछ भाग नदियों में और कुछ नालों में, वे तालाबों में सतही सरफेस वाटर के रूप में, और कुछ भाग रिसकर इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ग्राउंड वाटर के रूप में एक्वाफिर में जमा रहता है. सीसी पार्क ने अपनी जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें बताया था कि जो वाटर की स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ पे कितनी है. अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो 1 वीक इसमें स्टेबल रहता है वाटर, और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 8 से 10 दिन, नदियों की बात करें तो 2 सप्ताह, और मिट्टी की बात करें, मृदा की सॉइल्स की बात करें तो 2 सप्ताह से 1 वीक टू 1 ईयर. इसके अलावा लेक्स में और रेजवेरियर जो भंडार गृह है और वेटलैंड है उसमें वर्षों तक रहता है. रॉक्स की बात करें तो कुछ दिनों से हजारों वर्ष तक पानी रहता है उसमें, और हिम
स्नो की बात करें यदि हम, तो हजारों वर्ष तक है, और ओशंस की बात करें तो वो भी हजारों वर्ष तक पानी रहता है इसमें। जल की महत्ता का एक प्रमाण ये है कि ये जिधर से होकर भी गुजरता है तो इसने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया है, उनको संवारा है और विकसित किया है। पृथ्वी में बात करें तो 2/3 हिस्सा पानी होते हुए भी सिर्फ जो फ्रेश वाटर है वो 2.70% ही है। इसमें भी जो इसका 3/4 भाग है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पोलर एरिया में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो हमारे उपयोग का नहीं है। अतः हम बात करें तो कुल जो फ्रेश वाटर है वो लगभग 1% भाग ही है, जो कि हमको नदियों, झीलों, तालाबों और भूजल के रूप में मिलता है, और वही हमारे लिए उपयोगी होता है। शेष 97.30% की हम बात करें तो ये समुद्री जल अत्यंत ही खारा जल है और अनुपयोगी जल है। लेकिन जहाँ पे अब इसकी एक और जो वर्ल्ड में बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियंत्रित जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और दिशाहीन विकास व कृषि में पानी का बढ़ते उपयोग के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, जैसा कि उसमें वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होने से पानी का जो बर्फ है वो पिघल रही है, और उससे सारा जो इकोलॉजी सिस्टम, जो वाटर साइकिल है, वो सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके अलावा जो मानसून की अनिश्चितता, जैसे कि जो हमारा देश है भारत, वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड है पानी के लिए, और भूजल का लगातार दोहन तथा वर्षा जल के बेकार बह जाने के कारण भी भारत समेत दुनिया भर के देशों में जल संकट उभर रहा है। और इस जो समस्या ने, जो स्वच्छ जल की जो उपलब्धता में कमी हो रही है और जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या ने संपूर्ण विश्व में ही विकराल रूप अपना धारण कर लिया है। अभी एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसमें विश्व आर्थिक मंच ने इस रिपोर्ट में बताया कि जल संकट को सबसे बड़े वैश्विक खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया है, लिस्टेड किया है इसने। जल संकट के विविध आयाम हैं, जिसमें भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रमुख है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, उपभोग की बदलती प्रवृत्तियां, क्योंकि जो चीज हम पहले रिसाइकिल करते थे वो अब हम बिल्कुल न्यू चीज लेने में विश्वास रखते हैं, तो इससे भी जो जल की मांग है वो बढ़ रही है। और बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, रहन सहन के स्तर में सुधार, शिक्षित कृषि का लगातार विकास हो रहा है, और जल की अधिकांश मांग करने वाली फसलों की पैदावार के कारण भी जो जल की मांग का दायरा है वो बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जो उसमें बताया था, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2030 तक दुनिया को पानी की आपूर्ति में 40% कमी का सामना करना होगा। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल ताजे पानी का 70% हिस्सा पहले ही कृषि में चला गया, और 2050 तक सिंचाई के लिए जल की मांग में 6% वृद्धि होने की समस्या है। यदि हम समय रहते इस जल संकट से बचने के लिए उपाय नहीं किया तो अगला जो विश्व युद्ध, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो विभिन्न कंट्रियों के बीच में और भारत में भी जो विभिन्न राज्य हैं, तो पानी को लेकर आपस में खींचतान होते रही है। और अभी एक रिपोर्ट आई कि जो पानी की मांग को पहले से ही बढ़ रही थी, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन ने उसमें और भी संकट बढ़ा दिया है। इसलिए जब 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, तो 2020 की इसकी जो थीम थी, जल और जलवायु परिवर्तन रखा गया था। और इसी में अब जो अब की बार की जो थीम रखी गई है वो रखी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि अदृश्य से दृश्य की ओर उस ग्राउंड वाटर जो है उसको हम सही इस्तेमाल करें। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने रखे हैं, 17 गोल्स है, उसमें भी इसका जो डे बनाने का मुख्य टारगेट है वो ये द डे एम टू सपोर्टेड द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। जो गोल नंबर 6 है उसमें भी यही कहा गया, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय
2030। तो जो 17 गोल्स है उसमें गोल नंबर 6 है, उसमें पानी की महत्ता के ऊपर बताया गया है कि 2030 तक सबको फ्रेश वाटर पानी उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य होगा। इसके अलावा एक अनुमान यह भी बताया गया है कि जो विश्व के 4 अरब लोग यानी कि 2/3 जनसंख्या हर वर्ष कम से कम 1 महीने तो पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझती है। इसमें जो अ, भारत में बात करें तो भारत में मूल रूप से जल संकट का मूल कारण है जल की बर्बादी और कुप्रबंधन। पिछले कुछ वर्षों में अनियमित मानसून और जलवायु परिवर्तन ने भी जल संकट को बढ़ा दिया है। तो हम सबको मिलके इसमें प्रयास करना चाहिए कि जो जल का है कुशलता के साथ उपयोग हो। एक भारत में बात करें तो भारत में संसार का 18% से अधिक आबादी है, लेकिन विश्व का केवल 4% जल संसाधन है। और विश्व के कुल भू क्षेत्र की बात करें तो 2.4% है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात करें तो 5,236 क्यूबिक मीटर था, जो 2010 में 1,588 क्यूबिक मीटर रह गया। तो यदि इसी प्रकार अगर जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो 2025 तक जो सरफेस वाटर है उसकी उपलब्धता 1,401 क्यूबिक मीटर और 2050 तक 1,191 क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो जल का है हमको मितव्ययता से और समझदारी के साथ और कुशलता के साथ उपयोग करना है। वाटर एड की रिपोर्ट आई थी अभी, बैन द सरफेस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर 2019 के अनुसार दुनिया की भूमिगत जल का 24% अकेला भारत इस्तेमाल करता है। यानी कि भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच में बात करें तो भूमिगत जल के घटने की दर 23% बढ़ गई है। 23% बढ़ गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत का फुटप्रिंट है, वाटर फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट का मतलब है कि जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसके शुरू से रॉ मटेरियल से लेके एंड तक उसको यूज में लेने तक फिनिश गुड तक कितने पानी का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि अगर एक कॉटन के कपड़े की बात करें, कोई जींस की बात करें, तो कॉटन को जब हमने उसको पौधे के रूप में उसको पानी से सिंचित किया और वो सेमी फिनिश गुड होके फैक्ट्री में गया, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल जो गुड्स आया तो उसमें कितने पानी का इस्तेमाल हुआ। तो ये वाटर फुटप्रिंट है। तो ऐसे सभी के जो भी जितने भी प्रोडक्ट है जिसमें वाटर का इस्तेमाल होता है उसमें उसके फुटप्रिंट की जो गणना की जा सकती है। तो इसमें इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और अब हमें अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी इंडिया में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो नीति आयोग ने निकाली थी, उसके अनुसार भी भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। वर्ष 2020 तक 21 भारतीय शहरों में भूजल समाप्त हो जाने की संभावना है अगर हमने सही मेजर नहीं किया इसको कंजर्व करने के। रिपोर्ट में कहा गया कि 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग 2 गुनी हो जाएगी। लगभग 40% जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा। जल संकट के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में 6% तक की भी कमी हो सकती है। और अभी देश के 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद नीति आयोग ने जल संसाधनों के तत्काल और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर डाला है। नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2019 में भी भारत के विकास और पर्यावरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए जल के वैज्ञानिक प्रबंधन पे जोर दिया गया है। और इसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जल की उपलब्धता की दृष्टि से खराब हालत है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, लेकिन राज्य में कुल जो सतही जल है वो 1.16% है और भूमिगत जल 1.70% ही भाग है। तो राज्य में भूजल की स्थिति भी बहुत ही चिंतनीय है। अगर राजस्थान की भूजल संसाधन रिपोर्ट 2017 की बात करें तो राज्य के कुल 295 भूजल ब्लॉक में से 45 ब्लॉक ही भूमिगत जल की दृष्टि से सुरक्षित है। और अभी
हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, रिपोर्ट जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, यदि हम बात करें तो संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक जो भूमि का जो रिचार्ज है वो 4,437.60 अरब घन मीटर है, तथा संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से देखा जाए तो 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल का निकाला गया है। तो इसके आधार पे इन्होंने बताया कि जो देश का कुल है, कुल जो ब्लॉक्स लिए हैं, अंडरग्राउंड वाटर ब्लॉक्स, जो 7,089 ब्लॉक्स में से 1,006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में इन्होंने डाला है। तो और राजस्थान की जहां पे बात करें तो राजस्थान की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राजस्थान में जो टोटल इस रिपोर्ट के अनुसार 302 ब्लॉक लिए गए हैं टोटल ग्राउंड वाटर के, उसमें सेफ वाटर के 38 है। इसमें ये कुल का 12.58% है। और सेमी क्रिटिकल जोन की बात करें तो इसमें है 20 ब्लॉक है, जो टोटल का 6.62% है। और क्रिटिकल जोन की बात करें तो ये 22 ब्लॉक है, जो टोटल का 7.28 है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड की बात करें, अति दोहन वाले की बात करें तो इसमें 219 है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है टोटल 302 में से 219 यानी 72.52% जो ब्लॉक है वहां पे अति दोहन हो चुका है। इसमें हम बात करें जो ये क्राइटेरिया की 1995 तक तो जो ये ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट की स्टेज था, इसको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था 1995 तक। इसमें व्हाइट कैटेगरी, ग्रे कैटेगरी, डार्क कैटेगरी और ओवर एक्सप्लॉइटेड। इसमें जो व्हाइट कैटेगरी है उसमें अगर ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट 65% तक है तो उसको व्हाइट कैटेगरी में रखा, और 65 से 85 तक है उसको ग्रे कैटेगरी में रखा, और डार्क जोन उसको 85 से 100%, और ओवर एक्सप्लॉइटेड में 100% से अधिक को रखा। और 1995 के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्होंने चेंज किया है, सेफ रखा है, जिसमें ग्राउंड वाटर की जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो 70% तक है। सेमी क्रिटिकल की है 70 से 90, जो पिछले वाले ग्रे के इक्विवेलेंट है। और एक जो थर्ड रखा वो क्रिटिकल, जो पिछले वाले डार्क जोन के इक्वल है, जिसमें 90 से 100% है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड जिसमें 100% से ज्यादा है इसमें। अब जो इसमें संभावनाएं हैं, जो जो ब्लॉक जिस जिस श्रेणी में उसके अनुसार उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है वहां पे। तो जैसे कि पहला बताया सेफ जोन में 70% तक है, तो उसमें ये सुरक्षित जोन माना जाता है। इसमें जो कुछ स्थानों पे जो नए कुएं या ट्यूबवेल या नलकूप बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सेमी क्रिटिकल की बात करें तो उसमें जो पहले के बनाए गए कुएं और नलकूप है उनको गहरा कराया जा सकता है। और क्रिटिकल की बात करें जिसमें 90 से 100% है, उसमें नए कुएं व नलकूप नए ही बनाए सकते हैं, नए ही उनको गहरा कर सकते हैं। किंतु जो भूजल की पुनर्भरण जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो बनाना चाहिए। और जहां पे 100% से अधिक है वहां पे सिर्फ भूजल को कंजर्व करने की हम विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेली सरकारी कुछ नहीं कर सकती, जबकि हम लोग उसमें शामिल होकर
घरेलू कार्य में जो पेयजल उपभोग में है उसमें जल प्रबंधन किया जाए। जैसे कि घरेलू उपयोग के लिए इस समय कई प्रकार की जल बचाव तकनीकें उपलब्ध हैं जिसमें हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे कि इन तकनीकों जो टेक्निक्स है इसमें ऊर्जा कुशल फव्वारे जो शावर लगाए, लो फ्लश का जो टॉयलेट है वो लगाए, और टॉयलेट में फ्लश के लिए खारे जल या समुद्री जल या वर्षा जल का प्रयोग करें। उच्च कुशलता वाले जो हेलो हेलो, यस सर। हाँ हाँ, और इसके अलावा जो कमर्शियल यूज है उसमें भी जो हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें घर में लो फ्लश टॉयलेट में प्रयुक्त जल बचत के उपकरण लगाए जाए, और जलहीन टॉयलेट, जलहीन कार को धोने के यंत्र, प्रेशर वाली वाटर ब्रूम और इत्यादि जो कई हैं उसको हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। मेन है कृषि में, कृषि उपयोग में जल प्रबंधन, क्योंकि जो मेन उपयोग हो रहा है वो कृषि में ही हो रहा है जल का। तो इसमें जैसे कि आजकल एक टेक्निक आ रही है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर में ड्रोन एग्रीकल्चर है। तो ड्रोन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो जमीन है वो समतल है या नहीं है, और कहाँ कहाँ पानी की कितनी आवश्यकता है, किस किस पौधे को, जो पर्टिकुलर जो पौधा है वहीं पे पानी उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी फैलेगा नहीं। इसमें जो नमी सेंसर है, और इसको एक एक टेक्निक है आईओटी। आईओटी काफी शब्द चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इसमें जो ये एक तरह से जाल है। इसमें देखा जाए तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जेक्ट विद सेंसर्स, processing ability, software and other technologies that connect and exchange data with other devices and system over the internet। तो इंटरनेट से जुड़े हुए ये सारे डिवाइस होते हैं और इसमें डेटाओं का आदान प्रदान होता है। ये एक प्रकार का जाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये एग्रीकल्चर में काफी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके द्वारा हम पानी की भी बचत के साथ साथ जो उत्पादन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इसमें। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई है, और ड्रिप एरिगेशन है, स्प्रिंकल है। इसके द्वारा भी हम जो जल की बचत कर सकते हैं और उपज में वृद्धि कर सकते हैं। एक है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब है कि हमको जो पाइप के द्वारा पानी तो पहुंचाना ही पौधे को, लेकिन उसी में यदि हम फर्टिलाइजर या जो भी उर्वरक है उसको मिक्स कर दें और वो डायरेक्ट पहुंचाएं तो उसका भी काफी फायदा हो सकता है हमको प्रोडक्शन में। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल में इसमें जो आर्टिफिशियल जो रिचार्ज है उसकी कई टेक्निक्स है। तो उसके द्वारा भी हम वाटर का संग्रह कर सकते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण नाम हैं भारत में। एक तो अनुपम मिश्र जी, एक राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन ऑफ इंडिया जो अलवर में ही है, और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जीवन का उद्देश्य था जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े काम करना। इन उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए इन्होंने 1975 में एक संस्था भी बनाई, तरुण भारत संघ। इस संस्था के जरिए उन्होंने सुस्त नौकरशाही और जो खनन की लाभी थी इनसे संघर्ष करके अलवर जिले में पानी को सहेजने के लिए जोहड़ तकनीक को बढ़ावा दिया। इन्हें जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं, और इनके फलस्वरूप आसपास के लगभग 1000 गांवों तक पानी पहुंच सका है। इन्होंने राजस्थान की जो 5 नदियां हैं, एक तो अरवरी, रूपारेल, सारसा, भगनी और जहाजवाली को नया जीवन मिला, वो पुनः जीवित हो गई। और इसीलिए इनको जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उनके योगदान के लिए 2001 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी इनको विभूषित किया गया है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण नाम है वो अनुपम मिश्र जी का है। इनकी 2 किताबें बहुत बेहतरीन है किताबें हैं। एक तो आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। तो इनको पढ़ के हम जो प्राचीन जो टेक्निक्स है, जो
प्राचीन के जो परंपरागत जो संरचना की टेक्निक है उनके द्वारा हम पानी को सहज कर सकते हैं। मुख्यतः इसमें जो राजस्थान में जो पानी को सहजने की टेक्निक है वो है, तो उसका कुछ मैं वर्णन करना चाहूंगा कि इनकी जो बुक के अनुसार ही जो बुक में लिखा है उसी में से लिया गया है। इसमें जो राजस्थान राज्य में सुनियोजित ढंग से बूंदों को संग्रह करने के लिए कुंडी, टांका, बावड़ी, बेरिया, नाडिया, तालाब, कुएं, झीलें एवं खड़ीन आदि बनाकर उनको वर्ष भर के लिए उपयोग योग्य बनाया जाता है। राजस्थान में वर्षा के से प्राप्त जल को हम 3 रूपों में बांटा गया है। इसमें वर्षा के सीधे धरातल पर बहते जल के रूप को पाला जल कहा गया है और भूजल के रूप में पाताली जल, और इन दोनों के बीच में रेजानी जल कहा गया है। तो राजस्थान में जो जल संचयन की परंपरागत विधियां है वो उच्च स्तर की है। इनके विकास में राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रमुख योगदान है। यहाँ प्रकृति एवं संस्कृति परस्पर एक दूसरे से समायोजित रही है। राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति को भी चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे कलात्मक बावड़ियां बनाई है, तालाब बनाए, झालरों, कुंडों का निर्माण किया है। और जो जल संचयन की ये पारंपरिक संरचना के द्वारा कृषि, उद्योग, पशुधन में उपयोग एवं पेयजल की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति का निर्माण किया है। और राज्य में सराय, शिक्षण संस्थाएं एवं जल स्रोत का निर्माण पुण्य का कार्य भी माना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कुंडी, कुंड एवं टाका के द्वारा वर्षा के पानी को रोककर उसका संग्रहण किया जाता है, जिसका मुख्य उपयोग पेयजल के लिए करते हैं। टाका के लघु रूप को, जो शॉर्ट रूप है, उसको कुंडी कहते हैं। और संपूर्ण मरुभूमि में भूजल लवणीय होने के कारण वर्षा जल का संग्रह इन कुंडों में किया जाता है। बहता पानी निर्मला की कहावत इन कुंडों के माध्यम से ही सार्थक होती है। कुंडी सब जगह होती है, पहाड़ पर, किलों में, मंदिरों में, घर के आंगन में, छत में, गांव में, रेत में, खेत में, और सब समय में बनती है। जिस आंगन में कुंडों व टांकों के लिए वर्षा का पानी जमा किया जाता है वह आगोर या पायतन कहलाता है, जिसका अर्थ है बटोरना। खाली होने पर इन्हें नाडियों एवं तालाबों से भर दिया जाता है। एक विधि है खड़ीन। खड़ीन जल संचयन की पारंपरिक विधियों में बहुउद्देशीय व्यवस्था है। और खड़ीन के अलावा हम बात करें, खड़ीन एक मिट्टी का बना बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जो किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। इसकी 2 तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी ओर पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खड़ीन की पाल को धोरा कहते हैं। खड़ीन द्वारा शुष्क प्रदेशों में बिना अधिक परिश्रम के फसल भी ली जा सकती है, क्योंकि न तो इसमें अधिक निराई की आवश्यकता, न फिर गुड़ाई की आवश्यकता, और न ही रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में इसके अलावा तालाब है, तालाब के अलावा झालर है, बावड़िया है। ये विभिन्न प्रकार के जो परंपरागत जल संचयन के स्रोत है ये हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत को जो अलग अलग इसमें राज्यों के हिसाब से बात करें तो जिंग जिंग एक संरचना है जो मुख्यतः लद्दाख में है। बर्फ बर्फ से जल इकट्ठा करके इसका पानी टैंक में इकट्ठा करते हैं। और एक है कुल, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में प्रसिद्ध है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में जल को नाले में डाल के और फिर इसका संग्रहण करना। इसके बाद आता है नोला, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड में है। ये नोला का मतलब है छोटे छोटे तालाब। इसके बाद आता है कुहल, ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है, प्राकृतिक जल धाराओं से सिंचाई का बांध बनाना। इसके बाद है खत्री, ये भी हिमाचल प्रदेश में पत्थरों को कुरेद कर बनाए गए टैंक। इसके पश्चात हम करें अरुणाचल प्रदेश में है अपतानी। अपतानी यानी कि सीढ़ी नुमा क्षेत्र जहां पानी के आने और निकलने के रास्ते होते हैं। आबो, ये नागालैंड की संरचना है जिसमें बहते पानी का संग्रहण किया जाता है। डोंग डोंग मतलब तालाब भी है, ये असम में प्रसिद्ध है। और बांस बूंद सिंचाई, ये मेघालय में है। बांस की नलियों के द्वारा धाराओं से जल लाकर ड्रिप इरिगेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। बावड़ी या बेर, ये सामाजिक कुएं।
राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से जो ये विभिन्न है जो तरीके हैं उसके द्वारा हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन है जागरूकता, जो जन संचार के माध्यमों से जल संरक्षण के लिए जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, पोस्टर, स्टिकर और एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन पानी के लिए अपनी जिम्मेवारी और अपनत्व का भाव पैदा करने की समाज में आवश्यकता है। तो ये ऑटोमेटिक ही जो पानी का संचयन है वो अपना आप ही हो जाएगा। इसके अलावा जो पूरे भारत में हम देखें पानी और पर्यावरण के मुद्दे पे जो महान जो विद्वान हैं जो पानी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अनुपम मिश्र जी, भरत झुनझुनवाला, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रमोद भार्गव जी, अरुण तिवारी जी बड़े अच्छे लेख लिखते, मैं अक्सर उनके लेख पढ़ता हूँ। जो जनसत्ता न्यूज़पेपर है उसमें उनके काफी लेख आते हैं। और इसके बाद में अरुण कुमार या पानी के बाबा, सुनीता नारायण मैडम, अनिल अग्रवाल जी, मनीष मोहन गोरे, इनके लेख जो विज्ञान प्रगति या योजना और कुरुक्षेत्र में काफी अच्छे आते हैं, इनके पर्यावरण से संबंधित आते हैं लेख काफी। और जैसे कि जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं इन्होंने भी जल संरक्षण के लिए काफी अभियान चलाए गए, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, न्यूज 18 का एक पानी का मिशन था, वो भी काफी अच्छा रहा। वो अच्छा रहा इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो अध्ययन ये जो जो जल संसाधन है इसके सतत प्रबंधन के लिए अन्य उपाय भी तो आवश्यक है। तो उसमें यह है कि अ, जल को जल का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। जल को एक दुर्लभ संसाधन मानने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए कि ये भी जैसा पैसा है वैसा ही जल है। जैसे हम पैसे को मितव्ययता से खर्च करते हैं तो इसको एक आर्थिक वस्तु माननी चाहिए जल को। तो उसके हिसाब से ही इसको खर्च करना चाहिए, सोच समझ के और समझदारी से। जल क्षेत्र के जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उसमें भी जो जल के आंकड़े हैं, सूचना है, उसमें एक कुशल प्रबंधन होना चाहिए जो डेटा का है और उसका आदान प्रदान जैसे आम नागरिकों और किसानों तक सही डेटा और सही तकनीक को पहुंचाना। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अ, तो अंत में यही यही कहना चाहूंगा, जल एक अनमोल संसाधन है और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और पानी की जो मांग लगातार बढ़ रही है, तो हमें जल संसाधनों का विकास पे सतत प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय संदर्भ में मानवीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसको एकीकृत और पर्यावरणीय तौर पे इंटीग्रेटेड रूप से आवश्यकता है, क्योंकि ताकि ये अनमोल संसाधन वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो मैं इतना ही कह के अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much. So if you can please open the chat box if there are any questions we can see. If any questions, please write them in the chat box. So we can pass it on to Dr. Soma. If there are no questions, integrated watershed process. Someone is asking Dr. Soma. Hello. Dr. Soma, can you hear me? Prem Soma. Please unmute. No, ये तो chat box पे I can't hear Dr. Soma lecture. Dr. Sona, can you unmute yourself? I think you muted yourself. Yes.
So I think he's not able to hear us or something. So now it's time to formally thank Dr. Suman for his excellent deliberation. And I would like to thank him because we invited him on a very short notice and he presented without PPTs and everything because he's a person who's been dealing with water conservation for a long time. And he has written a number of books on water conservation. So, with the bottom of my heart and from my patronage principle and from the artistic community, I would like to thank Dr. Suman and our gratitude to him. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. So now let's move to the last speaker of the day. He is Surinder Pratap Singh Kochari, who is working as assistant professor. To the speakers, Dr. Kochari. So the last speaker of the day is Dr. Surinder Pratap Singh Kochari. He's working as assistant professor at SS Jain Support PG College, Jaipur. There's a tagline in his CV which I would like to tell everyone to know. To work with an educational social organization which will give me the space to grow and enhance my potential in my social life while I contribute to the organization using my current knowledge and qualification to improve educational status of our society. That was a great thought, and he's a person now actually commerce, but I would like to talk something about environment. He's a key researcher and a very good teacher. Number of business publications he has credit. He's a member of a number of educational bodies. He has done many seminars, webinars, and international conferences. And also, sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन. So I would request you to kindly start with your information. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? Sir, बहुत अच्छे हाँ, से we can see. Yes, sir, we can see you and we can hear you as well. Please go ahead. थैंक यू मैम. मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर हुकम सिंह जी, प्राचार्य गवर्नमेंट आर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज अलवर एवं डॉक्टर ममता शर्मा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा. उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. एक बहुत ही आकर्षक विषय एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं बहुत दिल से आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्वलंत विषय है जिस पर हमको सोचना चाहिए और इस तरह की सेमिनार को हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन में बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके. वर्तमान में आपने देखा होगा कई ऐसी चीजें हैं जो चलन से बाहर हो रही है. उन चीजों का सही प्रकार से निस्तारण करना आवश्यक है. आपने देखा होगा एक समय था जब हम ऑडियो कैसेट सुना करते थे. धीरे धीरे समय बदला और उसके बाद सीडी रोम आ गई, सीडी ड्राइव आ गई और सीडी मिलने लगी बाजार में. और कुछ ऐसी चीजें जैसे प्लास्टिक कवर्स, ऐसी कई चीजें थी जो एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक थी. उसके बावजूद हमने उन चीजों को निस्तारण किया. क्या आपको पता है आज प्लास्टिक कवर, ऑडियो कैसेट, वो पुराने टेप रिकॉर्डर, विभिन्न प्रकार के टेलीविजन, वो कहाँ गए हैं? आप जब ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे नहीं. उनका प्रॉपर निस्तारण नहीं किया जाता तो आज ये इस पृथ्वी पर कितना पोल्यूशन कर सकते थे. सरकार ने कई जगह प्लास्टिक बैन कर दिया है, फिर भी हम प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं. ये गलत कार्य जो हम करते हैं. आज हम प्लास्टिक यूज करके हम हमारी पृथ्वी को ही प्रदूषित कर रहे हैं. हमें चाहिए कि उनका संपूर्ण विध्वंस कर संपूर्ण त्याग किया जाए प्लास्टिक का. आज मैं कुछ समय पहले मुझे कहीं विदेश जाने को मिला तो वहां पर व्यक्ति इतना डिसिप्लिन है, यदि उसे रेड लाइट क्रॉस करनी है तो भी वो रेड लाइट से जब ग्रीन लाइट होगी तब जाके पैदल चलेगा. ठीक है, सरकार के पास कई रास्ते हैं आपको मनवाने के लिए, लेकिन सरकार उस तरह से कार्य नहीं करना चाह रही है जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं. हर तरह का जुर्माना किया जा सकता है, हर तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती है, हर तरह की रोक लगाई जा सकती है. व्यक्ति खुद नहीं, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है. हमें स्वयं डिसिप्लिन में आकर, स्वयं अनुशासन को मानते हुए इन सब चीजों को मानना है. हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है.
मैं एक जैन हूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक शपथ दिलाना चाहता हूँ, एक आपसे वचन चाहता हूँ। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैडम और हुकम सिंह जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसी अवेयरनेस हर इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाए। और मैं आप सबसे एक शपथ दिलाने के लिए आह्वान करता हूँ, आज हम ये शपथ लें कि हम हमारे डेली जीवन में सुबह शाम जब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हम हमारी प्लेट में उतनी चीजों का हम सेवन करें या उतनी ही चीजों को हम हमारी प्लेट में रखवाएं जितना हमें आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से हम लोग जागरूक और पढ़े लिखे लोग हैं, पहले हमको करना पड़ेगा, फिर बाकी लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें करना हमें इतना सही है, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें हमारी डाइट पता है, हमें उतनी ही चीज हमें प्लेट में लेनी है। एक दाना अन्न का एक दाना भी हम वेस्ट करते हैं तो वो पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई जगह अनाज ही नहीं है, लोग अनाज के लिए तरसते हैं, वहाँ अनाज है नहीं, हम अनाज को वेस्ट कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। मैंने आज 2 साल पहले सबसे पहले मैंने खुद ने ये वचन दिया अपने आप से, मैं प्लेट में एक दाना भी छूटा नहीं छोड़ूंगा। वो एक दाना अगर विश्व की पॉपुलेशन अगर हर व्यक्ति छोड़ने लग जाए तो आप सोचो कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है उससे। हम ये चाहेंगे, हम ये आपसे आशा करते हैं कि आप ये वचन आज जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है हैंड्स अप करके मुझे बताएंगे कि ये वचन सब जने ले रहे हैं। ये ऑनलाइन वचन हम सबको ही दिलाना चाहेंगे ताकि हम हमारी पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट है उसे संरक्षित कर सके। हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी। आज हम बच्चों को सिखाएंगे तब जाकर वो बच्चे इसके लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। और मैं मेरा तो विषय नहीं है लेकिन मैं इस विषय को बहुत करीब से जानता हूँ। आज कहीं पे भी हम जाते हैं, कहीं गंदगी दिखती है तो सबसे पहले उसका विरोध एक शिक्षक ही करता है और उसका विरोध किया जाना आवश्यक भी है। जो लोग ये वचन ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है काफी लोगों ने हैंड्सअप किया है, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद के लिए सबसे पहले मैं हुकम सिंह जी जो प्राचार्य हैं कॉलेज के, उनको ये कहना चाहूंगा इस तरह के सेमिनार नियमित रूप से होने चाहिए। इस तरह के इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म आपने जो प्रोग्राम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सामने अपने व्यू रखने के लिए। मैं ये शपथ कई जनों को दिला चुका हूँ, आप देख रहे होंगे कई लोगों ने हैंड्सअप किया है और ये परंपरा चलनी चाहिए। हम ये सोच लें कि हम आगे 10-15 जनों को इस चीज का कसम दिलाएंगे, तभी हमारी जो पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। जब तक धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अनाज नहीं होगा, तब तक कुछ भी सुरक्षित रहना मुश्किल है। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Puthani. मैं भी ये शपथ लेती हूँ। मैं एक्चुअली आप शपथ तो आज याद दिला रहे, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं सच में अपनी प्लेट में कुछ न छोड़ूं। We all should know that crores and crores of people sleep hungry in all over the world, and it is so well said by Dr. Puthani. I think we should be thankful to Dr. Puthani at least for waking up some humanity inside us. So with a lot of gratitude and respect, I would like to say thank you to Dr. Puthani for your time and joining us at such a short notice. And I believe you are going to join us in ISTTP-5 with a lot more time and a lot of information. Aapka bahut dhanyawad. Thank you so much. Thank you. With this, we come to the end of the sixth day of ISTTP-5. I would like to extend my heartfelt thanks to all the speakers who are very grounded and knowledgeable scientists of their field, and they have spared their valuable time to be with us here in this training program. I would like to tell all the speakers that we, the organizers and the participants, are very happy and delighted to have you here with us, and I hope you all had a wonderful time too. I would like to thank all the delegates who join us every day to be with us, because you are the one who are making this training program a training program. Without you, there's nothing can happen. So I'm so very thankful to all our delegates who are joining us from the different. There been a lot of talk about the feedback link, and I would like to tell you that since ISTTP-4, we decided to have just single feedback. And this feedback form will be circulated tomorrow in the valedictory function. Valedictory function will start at 2 p.m. So I will request everyone, and we will also write in the WhatsApp groups and the Telegram groups that please join us during that time and do fill the feedback form, because without feedback form, we will not be able to provide you the certificate. As per the UGC norms, there are 3 things you must do.
That is the registration. If you have not registered yourself, registration is still open. Please register yourself. And then do send us your home assignment, which will be circulating today. And after that, do fill the feedback form tomorrow. So if you miss out any one of these, we will not be able to provide you the certificate of ISTTP-5, because then I'm bombarded in my chat box, and then I'm bombarded on my emails that why we have not given this, why we have not given this. So I always tell you that please you receive things that we will be able to provide you the certificate. So now this is Dr. Mamta Sharma, Organizing Secretary of ISTTP-5, along with my computer program Sheetal, my patron principal Hukam Singh Ji, my friend Sudhashu Kumar, and Dilip, and everyone. We are signing off from Rajrishi College Alwar campus, and we would like to see you all tomorrow at sharp 11:15 a.m. So till then, take care, be safe, and have a fantabulous day ahead. And bye-bye.